Good morning. Very good morning. Wow, just give me a minute. Let me just admit everybody in. So you're looking very fresh, Chitra, early morning. Thank you. Thank you. Good morning, Tanvi. गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुड मॉर्निंग आज चित्र तो तन्वी बहुत फ्रेश लग रही है. Good morning, Tanvi. यस यस मैं फ्रेश हूँ क्या बात है. ग्रेट. सो आज कौन रीड कर रहा है? उतनी फ्रेश नहीं हूँ रियाज नहीं हुआ चलो मैं पढ़ लेती हूँ. सही I shall. सही है सही है. Just a minute. Yes. No, so before that, how was yesterday? हाँ. मुझे मैंने ना एक अपना पैटर्न पकड़ा ठीक है विच इज हम ये आई थिंक कॉलेज टाइम से है कि समथिंग आई यूजुअली फाइंड टू नैग मी ठीक है मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा एंड देन समथिंग बी इट बिग बी इट स्मॉल डिपेंडिंग क्या सिचुएशन है बट कुछ मैं पकड़ लेती हूँ खुद को नीचे करने के लिए ठीक है एंड दिस आई रियलाइज्ड यस्टरडे जब मैंने आपको कहा था ना कि मुझे डर लग रहा था कि इतना अच्छा चल रहा है एटीट्यूड फिर बंद हो जाएगा क्या ठीक है तो आपने बोला कि सोचो कि ऐसा क्यों लग रहा है तो मैंने 2 दिन सोचा देन आई रियलाइज कि दिस आई बीन डूइंग सिंस कॉलेज कॉलेज में लड़की बुली करती थी तो वो दिमाग में आती रहती थी बाद में कुछ हुआ तो वो दिमाग में आता रहेगा बट वो दिमाग में आता रहेगा एंड जाएगा नहीं एंड हम खुश होंगे बट पीछे से आ जाएगा बट ये बात मत भूलना ऐसा टाइप का Okay. हाँ एंड आई थिंक आई डोंट थिंक आई एम द ओनली पर्सन हु डज दिस लाइक आई फील लाइक एज Right? वी आर predisposed to negativity it's so Yes, yes. तो कल मैंने ना अपने 10 ग्रैटिट्यूड सुबह से लिखते हैं ना आई रोट फॉर दिस सिचुएशन दिस थिंग दैट आई डू एंड द फैक्ट दैट आई नाउ हैव डिस्कवर्ड इट या मुझे समझ आ गया कि ये पैटर्न है सो आई शेयर 2-3 ग्रैटिट्यूड उसमें से एक था कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव डिस्कवर्ड दिस पैटर्न ऑफ माइंड I'm very grateful that that such patterns are very easy to break if I don't like the match. फिर उसके बाद I'm very grateful for the technique of saying I refuse to like this matchstick and I will only do good for myself and thank you for this chance to make myself stronger. अब कल पूरे दिन जितनी बार मेरे दिमाग में आया ही है कुछ भी नैग आई वाज लाइक नहीं मैं माचिस वाला इमेज बार बार आ रहा था मेरे दिमाग में एंड क्यों आया पता है बिकॉज कल अपना सेशन खत्म हुआ फिर हम अपने यूट्यूब आपके यूट्यूब चैनल पे गए जहाँ पे आपने पहले का डाला सो हम एक दिन हाफ क्लास मिस किए थे ना तो हम सोचे चल पढ़ तो लिया था बुक से बट देख लेते कि पहले उसमें शेयर क्या किया सबने उस दिन चित्रा ने 10 मिनट शेयर किया था अपना पूरा वो मैथस्टिक एनालॉजी एंड वो खुद से बात करने का एंड वो मुझे बहुत इंस्पायर किया तो पूरे दिन मेरे दिमाग में आपका वही चल रहा था सो उसके कारण ये एंड इट रियली वर्कड फॉर मी जैसे Very good. दिमाग में आ रहा था उस टेलिंग माई सेल्फ इस बार मैचेस नहीं चलाई Very good. Very good. No, no. That's what we all do. Yes. मैंने देखा है हम ना पूरा टाइम हमारे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है. हम बस मैचेस चलाए रखते हैं उस पर. एंड देन वी से कि यार हमारी लाइफ ऐसी क्यों चल रही है. एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग मेरे से अब कोई भी पूछता है ना हाउ आर यू डूइंग आई जस्ट ऑलवेज से आई एम डूइंग अमेजिंग आई एम डूइंग ग्रेट बहुत अच्छा चल रहा है बिल्कुल ठीक बात है. सो वो कहते हैं ना जब हम छोटे थे तो वी यूज टू रीड दिस फेक इट टिल यू मेक इट, है ना. और मेरा तो बहुत ही फेवरेट वाला था कि थोड़ी देर अगर आप जबरदस्ती हंसोगे तो थोड़ी देर बाद यू नो यू वोंट इवन रियलाइज व्हेन दैट जबरदस्ती की हंसी बिकम्स योर नेचुरल हंसी, बट एटलीस्ट स्टार्ट लाफिंग हा 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 करके. ठीक है. तो हाँ मतलब आई थिंक व्हेन आई वाज यंग इवन इन लेट इन स्कूल इन कॉलेज आई यूज्ड टू डू दिस एंड आई यूज्ड टू टेल एवरीबॉडी टू डू दिस. कोई भी रोता रोता था ना मेरे आसपास मुझे लगता था यार ठीक है तू कुछ नहीं कर सकती ना कोई बात नहीं है. हाँ हाँ तो कर सकती है हंसती रहे थोड़ी देर में अपने आप नेचुरल हो जाएगी तेरी वो हंसी. तो यस सो देर आर वेज टू लिव योर लाइफ एंड वेरी इंटरेस्टिंग तन्वी. तन्वी मेरा ये पॉइंट है कि यहाँ पर कि जो भी आपने कल करा ना उसमें
जो भी आपने 3 पढ़े, ठीक है, आई थिंक थोड़ी और डेप्थ चाहिए. जैसे अगर आप उस दिन चित्रा की शेयरिंग देखोगे ना, जो आपने सुनी है, there was a huge depth, and next day same चीज जब चित्रा से पूछी तो she was like mama 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 mama. Right चित्रा, है ना? Yes, yes. हाँ, so I think you must do this again. एंड दूसरी बात, उन सिचुएशंस ने क्या पॉजिटिविटी क्रिएट की है तन्वी, वो भी तुम्हें कहीं, वो भी मैंने लिखा. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने लिखा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, okay, I'm very grateful that that those sorts of situations gave me a part of the very strong moral code I have, because it made me aware of how evil acts affect other people. So now I will never cause it to anybody else. ऐसे करके भी मैंने बहुत सोचा कि इसका पॉजिटिव क्या होगा. एक मैंने ये भी लिखा कि इतना मैंने सफर किया, वो मैं अपने सॉन्ग्स और आर्ट में डाल सकती हूँ. एक और मैंने लिखा कि इसने मुझे एक बहुत एम्पैथेटिक इंसान बनाया, बिकॉज अब किसी और का सफरिंग में एक बार में समझूंगी. ये सब भी था. परफेक्ट. तो अभी भी इसमें जो नेगेटिव कॉनोटेशन है ना, वो सुन रहा है. ओके. ठीक है, मतलब हाँ, हाउ इट बेनिफिटेड यू, उसको डेफिनेटली यू ट्राइड टू आंसर, बट वो बेनिफिट रियलिटी में उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा है, वो नहीं सुन रहा. तो और सोचते. हाँ, इसको थोड़ा सा और डीप में जा. एंड दूसरी बात, जिन्होंने किया है ना, उनको जरूर ग्रैटिट्यूड देते रहो साथ साथ. वो भी डे 1 से दे रही हो. आपने जब कहा था कि हाँ, बिकॉज द ओनली वे टू गेट देम आउट ऑफ योर सिस्टम इज टू कीप गिविंग देम ग्रैटिट्यूड. ठीक है ना, एक दिन लगाओ, एक एक को पकड़ो, एक एक दिन में उसको ग्रैटिट्यूड देकर उसको साइड. मैंने उसको बहुत बार कहा कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय पास्ट. राइट, यस. तो कुछ भी गिला शिकवा नहीं रखना हमको. ठीक है जी, परफेक्ट है जी. सो नम्रता जी, आज सुबह से हमारी एक एक्सरसाइज थी. हैव वी स्टार्टेड डूइंग दैट? आज सुबह से हमें करना था कुछ. यस. किसने किया है? एनीबडी एल्स? I started it off. Yes, Great. Oh, very good. Wow, very nice. So what is there in this image? Just put करेंगे chairs. आज डॉक्टर. हाँ, 11 करेंगे. Yes, good. मेरा बहुत मन कर रहा है मैं बोल दूं, आई वॉज जस्ट चेकिंग अलर्ट कितने लोग हैं. नहीं, बट वो रीजन नहीं था. नहीं, आज बिल्कुल नहीं था. ठीक है, वो एक्चुअली कल का खुला हुआ था ना बुक, एंड जनरली इट ओपन्स ऑन द पेज विच वी हैव टू रीड. यस. सो अ मैजिक मॉर्निंग. सो आई एम श्योर हम सब सुबह से वी हैव बीन गिविंग, doing the exercise and giving thank you for everything. We woke up and did this thank you exercise. Perfect. Yes, Chitra. Yeah, just before that, yesterday I just want to share. So कल ये magic dust करते हैं. So I'm in the hospital, right? तो कल मैंने पहली बार, so 2-3 things I'm realizing is that जैसे जैसे दिन जाता है, I think everything is getting more connected. Like yesterday what happened, so I had to go for my session and I went. And like consciously through, it's a long corridor I have to walk. So consciously I was walking around, trying to look at everyone, some in the eye, some not in the eye, but definitely looking at each one of them and smiling my way, wishing them. And in my mind, sprinkling that magic dust. And when I went for the session and the girl who was doing it for me, I looked her at the eye. And I actually appreciated saying that you did a very good. And as they were saying, also the reason, ताकि वो genuine लगे. Not that I was consciously doing it. Subconsciously, I was like, if I have to do it, I should do it दिल से.
Yes. So मैंने उनको बोला कि मतलब बहुत लोग ने किया, but you did this like this. I didn't feel the heat and all that. I gave her a little bit of what. Immediately then she said, "Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपको. So you're the first person who's telling me this." And I was like, Imagine, imagine, जो right? बात सही थी तो वो तो बताना ही था, तो बनता है बनना बोलना. So she was very very happy. Then मुझे दोपहर को I had one more session. So immediately सामने से she's telling me, तो आप बताइए ना दोपहर को कितने बजे करना है, कोई टाइम है आपको करने के लिए? तो मैंने बोला 3 बजे से पहले. So like she took that one step further to ask me कि मतलब do you want any time preference for afternoon when I do it? And then she's telling me मैं तो नहीं रहूंगी, बट मैं बोल के जाती हूँ कि वो आपको कर दें इसके पहले और वो ठीक से करें, मेरी तरह करें आपको. Like what feedback I gave her. Right. She said I'll put that on like a baton to the person in the afternoon, but I will not be there. And Yes. I'll ensure the time that you want I will do. तो बहुत अच्छा लगा लेकिन सामने से asking कि कब चाहिए आपको. Like anyway I have to do it. And Chitra, yes, thanks for sharing this. And Chitra, see, हम सोचते हैं कि थैंक यू कितना कॉमन चीज है एंड वी ऑल कीप डूइंग इट ऑल द टाइम, राइट? है ना? एंड इमेजिन दिस गर्ल, शी मस्ट हैव बीन वर्किंग देयर फॉर सम टाइम नाउ, Yeah. right? And she's only treating patients. Correct. Now, and she doesn't remember anybody saying thank you to her. Absolutely. So, what I'm trying to say is that somehow this science, which we think we know, has somewhere we've lost it. Correct. हम इतने बिजी हो गए हैं अपनी चीजों में कि जब तक तो टाइम नहीं हम वो करते रहते हैं, और जब फंस जाते हैं तो क्रिप करने में टाइम निकाल देते हैं. और कई बार बोलते हैं कि कोई नहीं है हमारा, बट इफ यू रियली लुक एट इट, ब्लड से शायद कम लोग हैं या जो भी हो, but yesterday through the hospital when I was walking, so many people are there taking care of so many people. Exactly. I mean, एक नहीं होते तो कैसे होता, साफ करने वाला नहीं होता तो कैसे होता, would I stay in this hospital? मतलब इतना like I was through the day walking around the hospital, or then you were saying how much you're taking for granted everything happening or everyone being there. Yes. और एक्चुअली दोनों नहीं है. अगर उसमें से एक बंदा छुट्टी पे जाए तो मुश्किल, और एक बंदा काम नहीं करे तो बोलते ना ब्रेथरन एंड ब्रदरहुड, मतलब लिटरली यू आर एबल टू सी hundreds of people working in that hospital. Exactly. And उनकी families का कितना support है, all of that. Yeah. So I think this is an amazing feeling to be in. Very beautiful, Chitra, very beautiful. So Chitra, I wanted to share something. बोलिए ना. I think you had given a testimonial after our program. So yesterday we had that webinar and I happened to see your testimonial. Okay. You are looking so much better now. Thank you. You seem to have lost a little weight. You seem to have become a little younger. And of course, from the very first day to today, you seem to be smiling more and all of that. But I could actually see the contrast, a lot of difference, a lot of positive difference. All the best to you. Thank you so much. Thank you. Yes, Chitra, let's read this chapter. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius. The easiest and simplest way to ensure that the day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you're doing it. Beautiful. So, sorry, Chitra, I will take a minute here. Have you ever seen this कि जो काम शुरू अच्छा हो जाता है वो generally speed से खत्म हो जाता है. Yes. Right? And that's the reason we say we focus a lot on starting anything what we do well. ना? And so true, this line is कि अगर आपका morning अच्छा जाता है ना तो
पूरा दिन आप हैप्पी रहते हो, आपके सारे काम होते रहते हैं, आप बिल्कुल, मतलब कई बार तो दिन खत्म कैसे हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता, बिकॉज यू आर इन अ डिफरेंट जोन, Yeah, absolutely. राइट? So this is so beautiful and so true. Yes. There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your eyes. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It So doesn't matter beautiful. how, yeah, Right? Just read this line again. I think for all of us, if you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. Right? Great. it And doesn't lot matter. of us do this. Lot of us do this. Lot of us keep sleeping for a few days. Lot of us don't want to do anything for few days. Lot of us just keep sulking on certain days, right? Yes. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken you up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and all along all the streets to your home so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. Uh, so beautiful, no? When you read this line, what comes to your mind? एक plain canvas है कुछ भी start कर लो actually every morning you wake up at least that's the way I wake up. It's a new canvas. Paint anything from today. It's an empty Right. canvas. Paint what you feel like. Yeah, but when I read I'll read this line again and tell me what moves inside you. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. मुझे बिल्कुल अपना बचपन याद आ जाता है, या एक छोटी व्हेन वी आर यंग, जब हम हर जगह जादू ढूंढ रहे होते हैं, होता है ना, हमें हर जगह लगता है यहां से कुछ तो अच्छा सा निकलेगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो कोई होती नहीं है. सो एवरी टाइम आई रीड दिस लाइन आई बिकम अ 3 or 4 year old Preeti, and मतलब I actually start imagining that there is magic everywhere, कहीं कहीं सब जगह मैजिक पड़ा हुआ है बस. So this really makes me feel very very good. Yeah. It's like that song in that Annie जो था ना musical, वो Orphan Annie. Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow, you're always a day away. ये आप लोग सुनिएगा, ठीक है, मैं ग्रुप में डालूंगी. Perfect. Yes. Great. Yes, Chitra. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude
and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finish getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. Then make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast: the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. Every day without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I'm dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I'm guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have the magic part within me because one good thing after another happens. So beautiful. Chitra, just a minute. Let's look at this. Yeah. Have we started experiencing this joy? Yes. Right? Yes, a lot. Yes. And agar hum subhe, we are doing thank you, we are in gratitude. So one big thing happens is, कोई भी जो नेगेटिव थॉट, चूंकि एज अ हैबिट ह्यूमन बींग्स की आदत होती है, 10 अच्छी चीजें नहीं दिखती हमें, एक बुरी चीज हमें पूरा टाइम दिखती रहती है, राइट? द मोमेंट हम वो एक बुरी चीज की रेपिटेशन को खत्म कर देते हैं, तो देर आर सो मेनी गुड थिंग्स विच वी स्टार्ट सीइंग, एंड ऑफ कोर्स द डे स्टार्ट्स लुकिंग मैजिकल, और इतना ब्यूटीफुल हो जाता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार कोई डरने की तो जरूरत है ही नहीं, जो तुम सोचने वाले हो वही होने वाला है. And it's such a magical feeling that I think the way you start, तुम किस डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हो उसी डायरेक्शन में तुम पहुंचते हो. That's what I've realized here. If you are into gratitude and happiness, that's where you will reach. If you are into negatives and cribbing and fear and everything, then that keeps on increasing. वो कहते हैं ना, जिस पौधे को आप पानी देते हो वो बड़ा होता जाता है. So this is so beautiful and magical. Wow. Thank you. Yes, Chitra. As a good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you? Well, that's what it's like after doing Magic Morning, but multiplied. Beautiful. So आज कितने हम में से कितने लोगों ने मैजिक मॉर्निंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है? I have started. Great. So I have also started. Tanvi has also started. And जिन्होंने नहीं किया है, please do it just after the class. जिस भी चीज को आज आप टच करोगे, you have to just say thank you and see कहाँ से आई है, कितने लोग involved है, and सबको thank you करना है. Yes, let's read the magic practice number 11. A magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. From the moment you open your eyes until you finish getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. 3. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So beautiful. Wow. Yes. Do we have any questions or anything to share? More than question, I think the beauty was, and this is my personal thing. So you remember the first 2 days I was really bad, low and all that.
So and second thing, I think I told you that I had a breakdown and I couldn't write and I was finding it so difficult. Yes. So I was reading every day and I've been picking up definitely every day, being sincere about it and really putting my heart and soul genuinely into it. But yesterday and I've been rereading the gratitude, and yesterday I'm telling, भाई वो उस दिन तो मतलब 2 लिखने में इतनी दिक्कत हो रही थी, आज तो हमने 100 कंप्लीट कर दिया. So I'm like, so I'm telling myself, ऐसे ऐसे करके तो 100 तो लिख दिया, तो कहीं से तो 100 आया ही था. So I was feeling so nice and I was feeling like a milestone. Wow, मेरे को 2 लिखने में इतनी दिक्कत हो रही थी, अभी तो 100 भी लिख दिया. चलो अभी तो और भी लिखेंगे, हजारों लिखेंगे. Exactly. I felt so nice doing that. No, that is beautiful. And जब शुरू में लिखना शुरू किया था ना, तो 10 लिखने में भी सोचना पड़ता था. एंड अब तो ऐसा होता है कि लिखने के बाद हाथ दुख जाता है, पर दिमाग कहता है नहीं नहीं, अभी तो कुछ और ग्रैटिट्यूड देना बाकी है. So हाँ, तो अगर ये चेंज, इफ दिस फिनोमिनल चेंज वी कैन गेट इनटू आवर लाइव्स. एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज, मैंने क्या देखा एंड व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस आल्सो इज, सो एज यू ऑल नो, मैं गट हेल्थ के लोगों के साथ काफी काम कर रही हूँ ना आजकल. तो आई रियलाइज कि यार आप जो मर्जी कर लो, अनलेस यू शिफ्ट देयर मेंटल स्टेट, दे विल नेवर हील कंप्लीटली. So my thing was that they are working with me for 6 months, for 1 year, right? ठीक है, उस टाइम के लिए ठीक हो गए. 6 months later they are again back. क्यों? Because whatever you can do at other places, this is very powerful. So I thought let me just start this and create this, because ये हो गया तो उसके बाद में whatever else I will do, it will have more meaning, more sense, more benefit. So it is amazing, and every day you do it, you're just better at it. Perfect. किसी के कोई questions? नहीं, but I want to say Chitra ji looks like a different person. So आपको पता है when she wrote to me that I broke down and is it normal? Yes, Chitra? She separately sent me a message. So I just sent a message back saying होता है, because I knew now she is going to turn a new leaf. तो हम अभी तक जो भी ग्रैटिट्यूड में पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जितना ज्यादा हम फील करते हैं, उतना ही ज्यादा हम निकल कर आते हैं, राइट? सो चित्रा उस टाइम पे जिस स्टेट में थी, एंड द वे शी डिड इट, it just opened all the doors for her to now feel gratitude inside her. So one day she had asthma, she had bad sleep, she had bad health, right? All of that. She said, I actually collapsed or something like that. She really, but I knew now she's opening up. Now she's opening up, and I'm very confident that by the time we are at the end of the we are finishing the 30th day, she will share the good news of getting a job with all of us, and then she's going to treat all of us. Of course, goes without saying, bindas. Yes, because I can definitely see a lot of positivity in her, and I can definitely see things keep coming. No, I'll tell you, it is so powerful. तो मैं बता रही हूँ ना, I'm making my own clinic, a bigger one now, ठीक है? And I could never have thought of doing it. We at this age you don't want to invest all your savings into a clinic जब आपको पता नहीं है आपको कितने साल काम करना है. And अभी भी क्या हो रहा है, उसमें वर्क चल रहा है. एंड पहले क्या होता था ना, मेरा अकाउंट खाली होने लगता था, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट थिंकिंग, ओ यार काम रुक ना जाए, होगा कैसे, हु इज गोना सपोर्ट मी. Now I don't do anything like that. I think okay, ये एक्सपेंस करना है, ये मशीन चाहिए, ये एसी चाहिए, गुड, टेल मी कहां से लेना है, मनी इट विल कम, कोई दिक्कत नहीं है. So in the morning I get up and ask myself, आज कितना चाहिए, आज कितना मुझे बिल काटना है, and I'm grateful to them, and somehow उतने ही पेशेंट्स आ जाते हैं क्लिनिक में, कोई दिक्कत नहीं है मतलब. And so what is happening is, this journey of making this big clinic, is becoming so enjoyable for me.
नहीं तो शुरू शुरू में इतना टेंशन कैसे होगा, क्या करेंगे, वॉट एवर, एवरीथिंग कॉस्ट यार, एवरीथिंग कॉस्ट, राइट? एंड now suddenly there's no tension, there are only decisions to be made. Sometimes I make a decision, we will do it. Sometimes I make a decision, no, we will do it later. That's the only thing I'm doing these days. So it is very phenomenal, really magical. So very nice, Tanvi. I told you na, I don't know where you can see that testimonial. If I find it, I will share it in our class one day. She is a new person altogether. If the name would not have been same, you would not have recognized that she is Chitra only. Great, very good, perfect. So let's end this beautiful session with our little song and an affirmation for all of us. So we all can unmute if we want. This little light of mine, this little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. Beautiful. Have a very nice day and keep giving gratitude. Everything you touch today, everything you touch today, everything you experience today, put your hand here and just say thank you. Perfect. Have an awesome day. Bye-bye. See you tomorrow at 6. Thank you. Bye. Bye, Masi. God bless. Thank you, Masi. Thank you.